वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और बाजारों ने आज एक नया उच्चतम स्तर छुआ खुलते ही, लेकिन उसके बाद एक मुनाफा वसूली स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग जो इस समय हम देख रहे हैं और 96 अंक नीचे इस समय निफ्टी कामकाज करते हुए और 420 अंकों की लगभग गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में शार्प कट्स हैं, हालांकि इंडाइसेस को होल्ड करने वाले जो अहम और हाई वेट काउंटर्स है वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है अब, लेकिन जियो फाइनेंशियल एक ऐसा काउंटर है जो इस मार्केट को भी थोड़ा बहुत सहारा दिए हुए पॉजिटिव टेरिटरी में कामकाज करते हुए। ब्रॉडर मार्केट से क्या इंडिकेशन मिल रही है, क्या ये समय है मुनाफा वसूली का जो अभी तक नहीं आ रही है? एक कहावत है, शेर आया, पर वो शेर आता नहीं है और जब आता है तो पता भी नहीं चलता। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर समीर दलाल, President Natwarlal and Sons Stockbrokers, and Mr. Kush Ghodasara, he's a market expert. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। Let's start with you, समीर। बहुत समय से हम बात कर रहे हैं, वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, पॉजिटिव्स आर डिस्काउंटेड बाय द मार्केट्स इन एडवांस, इलेक्शन के रिजल्ट्स भी प्राइस में हैं, सब कुछ है, लेकिन करेक्शन जिसकी हम उम्मीद लगाए हैं बहुत समय से नहीं आ रही है। बट नाउ देयर इज एन इंडिकेशन फ्रॉम द ब्रॉडर मार्केट्स लाइक मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, जहाँ पे हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में बड़ी शार्प कट्स देख रहे हैं। आपका क्या नज़रिया बन रहा है इन स्तरों पे? अब आप करेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं? जी, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल जो आपने कहा सही कहा कि वी बीन वेटिंग फॉर करेक्शन फॉर सम टाइम एंड ब्रॉडर मार्केट थोड़ा थोड़ा सा करेक्शन देना शुरू किया हुआ है, बट आई स्टिल थिंक देयर इज स्टिल, how do I put it, some room for upside before we see a bigger correction. I'll tell you, जब HDFC Bank, Kotak Bank, Lever, ITC, many of your index heavyweights are down. If they start giving some sort of performance, then the index goes up, and I think everyone will forget about the fact that valuations look expensive, and the mid cap will also start थोड़ा participate करना शुरू कर देंगे. So yes, we are seeing some amount of correction, but is it going to sustain the correction? Is it going to reverse very quickly? Difficult to tell. Okay. But अगर हम last 2-3 महीने से देखें तो anytime there's been any correction in the market, it has been bought into. लोगों ने खरीदारी करके काफी अच्छा पैसा बनाया हुआ है. So just given the fact that जब corrections आते हैं, people buy and make money, that kind of sentiment, if it remains, the buying will come at these lower levels and kind of support the market. The question is then whether this जो selling आ रही है, whether that smart investors continue to sell. अगर वो selling continue होती है, so then there's a possibility of a deeper correction. But otherwise, I think market will probably go down a little bit and then start bouncing back up. And जब तक election है, I think this kind of trend will continue. Not expecting any major correction, though I believe a correction is very much overdue. I don't think it will come. I don't think this is the correction that we are all waiting for. I think it will still take some time before a big correction comes through. Very good afternoon, Kush, and thank you so much for taking out time. Kush, मुझे याद है कि आपने कहा था कि 22,500 600 के लेवल्स आप देख रहे हैं, अब उसके बहुत करीब आ चुके हैं हम। आज एक नया ऑल टाइम हाई निफ्टी ने टच किया, उसके बाद 100 पॉइंट्स की करेक्शन जो पिछले कुछ सत्रों से हम देख ही रहे हैं। फ्रॉम द लास्ट फ्यू वीक्स वी आर सेइंग द सेम थिंग। आज सभी ने भी बताया कि एवरी करेक्शन इज बीइंग बॉट इन, बहुत स्मॉल करेक्शंस। सो आपको क्या लगता है इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए, एंड विच इज द क्रिटिकल सपोर्ट लेवल दैट यू आर आइंग नाउ? तो गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली मुझे जो लग रहा है 22,500 का जो टारगेट था वो अचीव हो गया। तो मेरी फर्स्ट ट्राई ये रहेगी कि एक बार जो भी लॉन्ग्स है शॉर्ट टर्म के लिए एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। डोंट गो शॉर्ट, बट एटलीस्ट जो भी शॉर्ट टर्म पोजीशन है या आपने ये साल के लिए पोजीशन ली है, ये फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो प्लीज बुक प्रॉफिट। मुझे लग रहा है कि आई एम ऑफ द व्यू, आई माइट बी रॉन्ग, कि दिस मे बी द स्टार्ट ऑफ अ डीपर करेक्शन। इसका ये रीजन है, 2 हफ्तों से आप मार्केट को ऊपर जा रहे हो, बट mid cap small cap is not performing. Of course PSU में एक रैली है, that is the only doubt I have. जब तक PSU strong है तब तक market will hold, but new rally मुझे अभी नहीं दिख रही है। So crucial support level for short, going short for a deep correction मेरे लिए है 22,250। अगर ये लेवल ये वीक में ब्रेक होता है on spot levels, तो definitely I will try going short overall Nifty and खास करके PSU stocks में। सभी बहुत ही क्रिटिकल डेटा इस इन्फ्लेशन डेटा जो 12 तारीख को हमारे यहाँ पे भी आएगा और यूएस में भी आ रहा है, एंड एवरीबडी इज आइंग कि इन्फ्लेशन अगर थोड़ा बहुत कूल ऑफ होता है तो मे बी
by June or July we might see some interest rate cuts coming from the Federal Reserve first. अगर ऐसा होता है और इलेक्शंस के नतीजे भी तब तक तो आ ही जाएंगे जून से पहले पहले, तो आपको लगता है कि the momentum that we are in is will keep kicking? There are various reports which are coming in that valuations को लेके चिंताएं नहीं करनी चाहिए हमको, खास करके इंडियन मार्केट्स को लेके, and they deserve premium. Is that right? So मेरा भी थोड़ा इस पे थोड़ा सा अलग है. Interest rate cuts usually come or indicate that the economy is slowing down. And when economy is slowing down, I don't see why market momentum should remain positive. वो in fact it should start to turn negative. So आपने जो फर्स्ट कहा कि शेयर आया, सब लोग अभी बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट आएगा इसलिए मार्केट बढ़ रहा है. जब एक्चुअल कट आएगा तो the possibility is that the market need not rally because that is built into the price. And then what you might see is some amount of profit booking because everyone is now starting to see कि there is a bit of a slowdown, there is a bit of a concern. इसलिए Fed ने interest rate cut चालू किए हुए. So it is a question to see what data points actually show up. Inflation coming down is वो नीचे क्यों आ रहा है? Because consumption is slowing down, right? And if that is the case, then globally, I don't see why market should continue to rally upward. The fact that because data points are strong, inflation is still high, markets are saying that profitability in companies will still remain. So it is kind of counterintuitive. Interest rate cuts may actually lead to a fall in the market rather than a rise in the market. राइट. कुश, रिलायंस और जियो फाइनेंशियल्स दोनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या नज़रिया बन रहा है? जियो फाइनेंशियल आज गिरते बाजार में भी करीबन 4.5% का इजाफा इसमें देखने को मिल रहा है, और रिलायंस जो बाजार को सहारा देता रहा है आज थोड़े बहुत कट्स है. दोनों का चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं इस समय? डेफिनेटली एक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेस पर एक स्प्रेड बन रहा है. रिलायंस को सेल करे और जियो को बाय करे. टेक्निकली मुझे लग रहा है रिलायंस इज एन ओवरबॉट जोन और नेगेटिव डाइवर्जेंस था. यानी सिंस लास्ट 3 वीक्स प्राइस वाज गोइंग अप ऑन रिलायंस, बट उसके सामने टेक्निकल मोमेंटम इंडिकेटर्स लाइक आरएसआई एमएससीडी वर गोइंग डाउन. तो मुझे लग रहा है कि रिलायंस में करेक्शन आएगा तो रिलायंस को सेल कर सकते हैं, और जियो फाइनेंशियल मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा, ऑड वन आउट रहेगा. तो आई विल बाय जियो फाइनेंशियल एंड सेल रिलायंस. स्टॉप लॉस ऑन जियो फाइनेंशियल फॉर शॉर्ट टर्म वुड बी 320 एंड रिलायंस में सेल का स्टॉप लॉस वुड बी 3000. सबीर सर, आपकी टाटा ग्रुप पे इस समय आपका नज़रिया क्या है? व्हाट इज़ योर व्यू? बिकॉज बहुत सारी स्टोरीज निकल के आई है. एक तो टाटा मोटर का डीमर्जर, उसके बाद टाटा सन्स की लिस्टिंग, उसके बाद टाटा केमिकल का भागना और आज 10% नीचे लुढ़कना. हाउ डू यू सी दिस एंटायर स्टोरी पैनिंग आउट फॉर द ग्रुप? और इनमें से कोई चुनिंदा स्टॉक्स जो आपको वैल्यूएशंस पे अभी भी अच्छे लग रहे हैं? So Tata Group में let us look at the bigger picture. Is the Tata Group ready to list its holding company Tata Sons, जहां से they do all of their charitable activities. Today, when you list a company that is doing a lot of CSR work, charity work, shareholders are not going to be very excited from the fact that this is where the outflow of money is happening, not from profit point of view, but from a charitable point of view. Right. The company is not in the business of doing business of making profit. Right. So जो मुझे लग रहा है कि probability of Tata Sons listing first of all seems a little less. They will figure out a way where they can probably take out some part of the business which requires them to be listed and keep the Tata Sons unlisted and figure out कुछ ना कुछ solution ऐसे निकालेंगे. But I don't see Tata Sons being listed. And जो hype up हुआ था because of which जो सब टाटा के group companies run हुए थे, I don't see कि उनका value realize होएगा. Okay. And that is why today what you can see is a sharp correction in Tata Chemicals. In the entire group, when you were talking of Tata Motors and the demerger of the personal vehicles and the commercial vehicles, it is actually a very good step because the commercial vehicle business by itself independently actually can focus more on growth and becoming more profitable versus the personal vehicle business, which is very dependent on Jaguar Land Rover. Because if Jaguar Land Rover, we know that UK is already in a kind of slowdown. Right. We know China is struggling. These are two big markets for Jaguar Land Rover.
US market अगर interest rates cut होने लगते हैं, which is an indication again I'm saying of a slowdown, then need not be कि auto sales will remain very very strong. Right. So if that happens, then the private vehicle business, which is actually getting a lot of the value because of the growth that is there, might start coming off. And as a shareholder, if I have two separate, I can choose whether I want to be a part of the commercial vehicle business or the private vehicle business. और मुझे commercial vehicle business में from India domestic point of view से I see a lot of good opportunities. So that is something I would like. We can hold on to both of them, no doubt. But I think commercial vehicles demerger is a good step that the Tata Group is taking. अगर मैं Tata Group में, if I look at anything where I see value, honestly, valuations में comfort किधर भी, I'm not seeing any comfort. Whether it's Tata Steel where I've seen big run-ups, whether it is Tata Motors, Tata Chemicals, Trent. अभी Trent has moved up by almost 30-40% since the last result for the reason that they showed good SSSG. But वो maintain करना is not going to be the easiest thing, because at the end of the day, when जो उनका brand Zudio grow हो रहा है, it is very high in turnover but very low in profitability, क्योंकि the gross margins for that business are lower. Again, when they keep setting up new stores, there's a upfront investment जो रहता है, which will keep eating into the profitability and all of those factors. So honestly, if you ask me, in the Tata Group, as good as the companies are, as good as the group is, valuation comfort nahi hai, and I would not look to buy into any of the Tata companies. कुछ टोरेंट पावर में आज करीबन 13% का इजाफा है. उन्होंने एक बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है उन्होंने जीता है. दे हैव वन द बिड फॉर दैट 306 मेगावाट का. उसके चलते एक अच्छा रुझान बना हुआ है. आपको कैसे लगता है चार्ट पे, और एनी ऑफ द पावर कंपनीज दैट यू वुड सजेस्ट बाइंग एट दीस लेवल्स? डेफिनेटली टोरेंट पावर पहले अगर बात करें तो मुझे डेफिनेटली अच्छी लग रही है फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज आप देखो एक स्लो मूवर है, बट चार्ट्स आर पॉजिटिव. वीकली चार्ट पे 1050 का स्टॉप लॉस है. ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है 1700 का ये स्टॉक जाएगा. सेकेंडली आई एम बुलिश ऑन टोरेंट पावर. फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, but as a customer satisfaction, Torrent Power headquarters in Ahmedabad, since last 15 years, I have not seen any power cut, except if there is a maintenance. तो मुझे लग रहा है they are expensive, definitely, but आज आदत हो गई, there are no generators. आप अहमदाबाद में कहीं पे भी जाओ, generators नहीं है, even in commercial, except 5-star property. तो मुझे लग रहा है कि they are charging high, so margins are very good. They are expanding to Surat, even Agra. तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से टोरेंट पावर आपको रखना चाहिए. स्लो मूवर है. 1050 का स्टॉप लॉस, 1700 फर्स्ट टारगेट. एंड सेकंड पावर स्टॉक जो मैं पॉजिटिव हूँ इवन ऑन चार्ट फ्रंट इज टाटा पावर. टाटा पावर अच्छा रन अप दे चुका है, बट इफ यू कंपेयर इट्स चार्ट्स विद लास्ट 10 इयर्स विद बेंचमार्क इंडेक्स, तो अभी भी डाइवर्जेंस है. तो 380 के स्टॉप लॉस से टाटा पावर अभी भी बाय करो लॉन्ग टर्म के लिए. 495 इज माय टारगेट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स. समीर, एसएमई सेगमेंट में जो आईपीओस के हम बौछार देख रहे थे, और उसके बाद लिस्टिंग गेन्स, उसके बाद एक ही घंटे में पूरा सब्सक्राइब होना इशू 100 टाइम्स 200 टाइम्स, उसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि सेबी सख्त हो रही है, जिसके चलते हुए कुछ कंपनीज पे पहले ही उन्होंने कुछ रेगुलेशंस टाइट की है, उन्हें कुछ मनाही भी की है. जेएम फाइनेंशियल्स वन ऑफ देम, आईआईएफएल फाइनेंस वन ऑफ देम. और ये एक ओवरहैंग सा हो गया है अब इस पूरे सेगमेंट में. क्या आपको लगता है कि वॉट एवर हैज़ बीन डन कीपिंग इन माइंड द रिटेल को संभालने के लिए या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, दिस आर द राइट मूव्स बाय सेबी? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे कौन कौन सी कंपनीज है जहां आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? जी, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट व्हाट सेबी इज डूइंग. एक थोड़ा सा बबल जैसे बन गया था, बिकॉज एवरीवन वाज लुकिंग एट दीज SME companies, listing के बाद doubling, tripling, multiple, expansion. And fundamentally, these companies are not as strong or are not as stable as some of the larger companies. And the valuation multiples that were being prescribed to them काफी high थे. So it is a right step. So what it will do is it will regulate some of the wrongdoings जो हो रहे थे SME market में. Genuine investors may get an opportunity. पर एक चीज मैं आपको definitely बोल सकता हूँ कि ये market में जो players थे who are doing all of these activities will find out some other alternative. ऐसा नहीं है कि वो लोग सब बंद हो जाने वाले. Look, the fact remains that this was a market created for small companies to raise money.
which is very good, which is very important. So SEBI needs to allow that to happen. Yes, it will reduce some of the speculation. So it is a good step, but people will find a way around it. Keep that in mind also and work. That's true, that's true. कुछ फार्मा स्पेस में आज कुछ हलचल देखने को मिल रही है, ज़्यादा गतिविधि तो नहीं है, बट येस फार्मा इंडेक्स इज इन पॉजिटिव टेरिटरी व्हाइल द मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल. जाइडस में थोड़ा बहुत रुझान है. ग्लेनमार्क सिप्ला भी अच्छा खासा एक बढ़त लेते हुए. सन फार्मा इज ऑल्सो अप नियरली 1.5%. आपको फार्मा स्पेस में क्या पसंद आता है? मुझे पता है कि आप whenever I ask you this question, आप कहते हैं कि it's better to go with a mutual fund, thematic pharma thematic fund, right? Yes, definitely. So long-term investing के हिसाब से definitely I will advise the same. But if you look at the stock specific trading perspective, purely future and option, सन फार्मा मुझे अच्छा लग रहा है. डेफिनेटली एक नए ऊंचाई स्तरों पे है. बट एमएससीडी हैज गिवन इंटरनल पॉजिटिव क्रॉसओवर. तो 1580 के स्टॉप लॉस से अभी भी सन फार्मा फ्यूचर बाय करो, प्योरली फॉर शॉर्ट टर्म. टारगेट वुड बी 1690 इन मार्च एक्सपायरी. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर प्लीज गो विद थीमेटिक फंड. समीर सर, इलेक्शन से पहले की हलचल आप देख ही रहे हैं. आई मीन एवरी वीक यू हैव अनाउंसमेंट्स ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बीइंग इनॉगरेटेड, इन्वेस्टमेंट. तो इंफ्रा स्पेस को देखते हुए, और अगर रिसेशन फेयर्स तो अभी भी बने हुए हैं यूएस में, यूके में, जैसे हम जानते हैं कि वैसे ही स्लो डाउन आ रहा है, और अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ मस्ट फॉर इंडिया टू कीप अफ्लोट विद अ टारगेट ऑफ 7.5% ऑफ ग्रोथ इन जीडीपी. तो ऐसे में आपको लगता है कि इंफ्रा स्पेस एक आउट परफॉर्मर रह सकता है फॉर FY25, कीपिंग इन व्यू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज टू बी ऑन अ हायर साइड अगेन? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज टू बी ऑन द हायर साइड. बट वन बिग पॉजिटिव दैट इज हैपनिंग इज कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनका केपेक्स थोड़ा थोड़ा अभी they started their project, their capex plans. So there will be some amount of contribution from the private side. So infra companies across the board will see good amount of activity. Again, क्या हुआ है इसमें कि again a lot of it is already factored into the price. So I'll just give you two examples. एक company थी Capacite Infra which is into developing of real estate for large developers like Godrej, Oberoi, Raymond. Which was trading at about 130, 140 about a year ago. वो stock that has run up significantly to almost I think 260, 270 levels right now. So what you're seeing is कि जो the infra projects that private sector is spending on is also factored in. और जो government के side पे L&T stock has also run up quite significantly क्योंकि जो large ticket infra projects जो government कर रही है, they usually go to some of these larger players like L&T, maybe an HCC. Some of these road projects go to these companies like Dilip Buildcon and IRB Infra and all of them. ये सब stocks में already काफी rally आ चुके हैं, which means that people are expecting these government projects to come through, which will allow these companies to grow their top line as well as keep some amount of operational efficiencies, benefits, profitability. So if the slowdown happens, I will go the other way. I will say yes, infra companies should do well. But if for some reason the government is not able to spend to what their जो उनका estimate है, and because of whatever physical constraints that they have or they have to maintain because they want to keep physical deficit under control under a particular number जो निर्मला सीतारामन जी ने कहा हुआ है, then that could be a negative trigger rather than positives already factored in, जैसे मैंने कहा. But the negative could be if the projects don't happen to the expectation of what the market is pegging. तो फिर a lot of these stocks will see a correction. So if things go as per planned, I think upside will be capped at maybe 10 to 12% in the infra space, but the downside is a little more. So even though I'm positive on it because I believe government is going to spend, upside, don't keep too much positivity on the upside, but keep a risk कि अगर नहीं होता है तो डाउनसाइड काफी हो सकता है. ओके, कुछ ऑटो स्पेस में इस समय आप क्या कर रहे हैं? ऑटो स्पेस में आई एम स्टिल बाइंग टाटा मोटर्स. टेक्निकली मुझे लग रहा है 1010 पे सपोर्ट अच्छा है. आई थिंक इट हैज टू कैच अप अ लॉन्ग रन अप. अगर बेंचमार्क से मैं 10 साल का उसका चार्ट करूं तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स पे मैं अभी भी पॉजिटिव हूं. 1010 का स्टॉप लॉस एक नियर बाय स्टॉप लॉस अच्छा है ट्रेडिंग के लिए, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हैं. ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है 1080 शॉर्ट टर्म में आ जाएगा.
समीर, अब गर्मियाँ आने वाली है, अब दिल्ली में भी अब आज मौसम ठीक लग रहा है और लग रहा है कि अब इस बार ये माना जा रहा है कि जितनी ठंडी थी उससे ज़्यादा भी गर्मियाँ होंगी और बेवरेज और एयर कंडीशनर कंपनीज जो है दे आर गोइंग टू बेनिफिट एज वी गेट इनटू समर सीजन. सो एनी ऑफ द स्टॉक्स दैट यू लाइक इन दिस स्पेस? So actually, you're right. Ki this time we are expecting a good. I mean, summer will be quite hot, and because of which you will see air conditioning, refrigerators, many of these various products. और एक उनका tailwind आएगा कि we are going into election. Election period में always the spending increases, especially towards the mass market kind of a product. Because at the end of the day, there are a lot of freebies given, or we know exactly जो दिया जाता है. So there will be some consumption boost, but the problem is the consumption boost will happen at the lower end. जो आपने कहा, so a company like a Varun Beverages might be a beneficiary of a very hot summer, which need not be the case for a refrigerator or air conditioning company or any of the likes of those. So I would play more consumption theme. जो consumption की theme है for so FMCG companies I think would get some amount of benefit from this. Especially जो ice creams और वो सब रखती है. Varun Beverages is something, again, valuation are rich, but if one quarter numbers come good, then the stock can continue to rally. When you talk about electronic goods, Dixon Technologies is one of the players जो आता है in mind for refrigerators and for ACs and all of those. But again, valuations are at very, very high levels. So I cannot recommend a buy even though I like it. Amber है, Amber Enterprises एक दूसरी है जो ACs बनाती है. But again, there is a little bit more valuation comfort in Amber, but I would play more of the lower ticket, smaller ticket size items like a Varun Beverages or a Hindustan Unilever, or for various other products which cater to those kind of places where consumption can grow. कुछ बैंकिंग स्पेस में क्या करना है, खासकर PSU बैंकिंग स्पेस में? I was just looking Canara Bank और SBI के चार्ट पे. I can't hear you, Kush. Yeah, now I can hear you. तो मुझे लग रहा है कि SBI और कैनरा बैंक का चार्ट में देख रहा था, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है अभी फिलहाल, क्योंकि आप देखो सुबह प्लस थे, ऑलमोस्ट 20 रुपए करेक्शन SBI ने दिया है, बट 770 इज अ स्टॉप लॉस फॉर लॉन्ग. 5 डे का एवरेज है SBI का और पिछले 1.5 महीने से ये सपोर्ट नहीं ब्रेक हुआ है. सो अगर 770 ब्रेक होता है फ्यूचर लेवल्स पे SBI, तो गो शॉर्ट. मुझे लग रहा है 720 तक ये स्टॉक आ सकता है. सो ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में my watch is on PSU stocks, और वहां पे अगर सपोर्ट्स ब्रेक होता है तो I will go short. समीर सर, आपके पास कितने कैश में हैं आप इस समय, और अगर आपके पास है तो आप कहाँ डिप्लॉय करने की सोच रहे हैं if we get a good correction this time? So we've been sitting on about 5 to 8% cash for some time, and in fact वो अभी थोड़ा बढ़ के almost 12 to 15% तक आ चुका है. We are putting it purely into arbitrage funds right now, because arbitrage funds में we get benefit of tax Right. from the equity point of view versus a debt fund or a bank or any of those things. But I still believe कि correction is coming, a bigger one. It may election के बाद शायद आएगा. Till elections you might see the market continue to rally. But I don't mind sitting on cash for a period of 3 months or 4 months before I deploy it. And आपके दूसरे speaker Kush also said कि he feels कि maybe this is a start of a deeper correction. So I hope he's right and this becomes a deeper correction so we can deploy the cash. But कभी कभार opportunities आ जाते हैं. So when there was an opportunity in HDFC Bank, we did use some amount of our cash reserves and buy a lot of HDFC Bank. So there are always stocks that correct जहाँ opportunity आते हैं. So it need not be that we sit in cash for extremely long. We might not wait for a market correction, but stock correction, or we might deploy that cash. So I'm not saying I'm going to stay for 3 months in this arbitrage opportunity. But जब भी हमको कोई स्टॉक अच्छा लगता है जहाँ करेक्शन अच्छा हुआ है, we will start making deployments of that cash. But yes, we are sitting on anywhere between 12 to 15% right now. जी, कुछ आपके रडार पे कौन से शेयर हैं? So SBI and Canara Bank sell side है मेरा, और buy में I am buying on commodities, silver. 2 हफ्ते पहले गोल्ड का मैंने बाय रिकमेंडेशन दिया था अपने चैनल पे कि गोल्ड लुकिंग गुड. तो ऑलरेडी we saw 5% rally in last week, and I think silver में अभी rally आएगी. So
एज अ ट्रेडर आई एम गोइंग लॉन्ग ऑन सिल्वर एंड सेलिंग स्टॉक्स, क्योंकि वन ऑफ द साइन मैं साइकोलॉजिकली स्टडी करता हूँ, व्हेन गोल्ड स्टार्ट्स सच अ रैली, इक्विटी का हाई इज नियर बाय, एंड सेकेंडली देयर इज टू मच ऑप्टिमिज्म फॉर आईपीओ, जैसे हम बात कर रहे जी थे एट रिटेल लेवल, और लाइक 2008, यानी मेरा ऑफिस बॉय आईपीओ भर रहा है पिछले 6 महीने से, उसको आइडिया नहीं है, बस पूछता है कौन सा आईपीओ भरना है सर, जी वो ऐप में जाके भर देते हैं। तो ये आइडिया नहीं, और वो लोग क्रेडिट कार्ड से पैसे, आई डोंट नो कैसे पैसे के जुगाड़ करके आईपीओ भर रहे हैं। तो दिस इज अ साइन कि देयर शुड बी अ स्टॉप एटलीस्ट। तो मैं सब इंटर मार्केट एनालिसिस करके मुझे लग रहा है कि दिस टाइम कुड बी अ राइट टाइम फॉर अ करेक्शन। जी कुछ सो बहुत आई एम बहुत बाइंग सिल्वर एंड सेलिंग स्टॉक्स। राइट कुछ बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। समीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी समय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस।